ओके देखो, तो यहीं से पता चला बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी एंड बीट टू राइट डाउन, बीट टू है, बोलो बोलो, बीटा इज इनवर्स, हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था, डेफिनेशन और एग्जाम्पल, सिद्धि को ना बोलो, डेफिनेशन और एग्जाम्पल डेफिनेशन, सर, अच्छा डेफिनेशन डेफिनेशन, ओके लिखो, फ्रिंज विड्थ लिखो, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, it is defined as the distance between two consecutive dark or bright spots, it is defined as the distance between two consecutive dark or bright spots, dark or bright spots, clear, डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, बीटा डी बाई डी। तो फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी, स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस, हुआ। एंड इसमें अभी बहुत इंपॉर्टेंट है जो गिरेगा एग्जाम में, लिखो, फिर इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, तो नोट करके लिखेंगे, ये जो नोट है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हुआ। अभी नोट नंबर 1, फर्स्ट नोट क्या है, देखो, अगर एंटायर apparatus को पूरा वाटर में डुबो दो, ये पूरा apparatus को वाटर में लेके डुबो दो, मतलब इसमें पूरा वाटर में ये एक्सपेरिमेंट लेके जाऊंगा और लिक्विड में एक लेके जाऊंगा, whose refractive index is mu, mu is the refractive index of the liquid, then what will happen about the fringe width, कैसे कितना होगा, देखो, फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स ऑन लैम्डा, डी कांस्टेंट है, स्मॉल डी कांस्टेंट है वाटर में, जो वाटर में मैंने लिया डी कांस्टेंट रखा, कैपिटल डी कांस्टेंट रखा, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वाटर का या फिर लिक्विड का, हुआ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स ऑन लैम्डा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, लैम्डा के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, पता है कि नहीं, रिफ्लेक्शन में पढ़ाया था, अरे म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, देयरफॉर बीटा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बीटा, अरे बीटा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, म्यू होगा। तो लिखो फर्स्ट नोट लिखो, व्हेन द apparatus is, लिखो, व्हेन द Young's apparatus is dipped in a liquid of refractive index mu, dipped in a liquid of refractive index mu, then the fringe width is given by, लिखो, when the Young's double slit experiment or when the Young's apparatus is dipped, Young's apparatus is dipped in a liquid, is dipped in a liquid of refractive index mu, dipped in a liquid of refractive index mu, then its fringe width is given by, beta dash is equal beta by mu. So fringe width will what, fringe width will decrease, new fringe width will be beta by mu, mu is the what, refractive index of the material, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सर हाँ बोलो बोलो अर्पिता, फिर से when the Young's apparatus is dipped in a liquid of refractive index mu, लिख रहे हो ना, of refractive index mu, then its fringe width is given by beta dash is equal beta by mu, then its fringe width is given by beta dash is equal beta by mu, समझ में आ रहा है, तो म्यू जितना ज्यादा होगा बीटा डैश उतना कम होगा, क्लियर हो रहा है, अरे क्लियर हो रहा है, हो गया। नेक्स्ट एंगुलर विड्थ क्या है, नंबर 2 इज द एंगुलर विड्थ थीटा, देखो
एंगुलर विड्थ क्या है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में? ये S1 and S2 are the two slits and capital D is the distance between the source and the screen. Small d is this distance. Clear? ये screen है, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट से ये बीटा है, दिस इज व्हाट बीटा, एंड दिस पॉइंट इज O. दिस इज नोन एज थीटा. थीटा इज नोन एज एंगुलर विड्थ. वो इज द सेंट्रल मैक्सिमा बोला जाता है. वो में जो ब्राइट स्पॉट मिल रहा है ना ये एक्सपेरिमेंट में, वो में जो ब्राइट स्पॉट मिल रहा है उसको बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा लिखो, राइट डाउन. थीटा इज नोन एज एंगुलर विड्थ, बीटा इज द फ्रिंज विड्थ जो लैम्डा डी बाई डी है. बीटा इज इक्वल लैम्डा डी बाई लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. लिखो थीटा इज नोन एज एंगुलर विड्थ. डायग्राम ड्रॉ किया? लिखो tan थीटा इज इक्वल बीटा बाई कैपिटल डी. बीटा is a lambda d by small d into 1 by d, getting cancels out lambda by small d. As theta is very small, very small, so tan theta is nearly equal to theta. Therefore, I can write here theta is equal lambda by small d. So angular width is lambda by d. Angular width is lambda by small d. Angular width never depends on the distance between the source and screen. लिखो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए. रीजनिंग क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये सब. थीटा इज इक्वल लैम्डा बाई डी. हो गया? Are you clear about this? Yes, sir. लिखो thus angular width is independent of the distance between the source and the screen. Angular width is independent of the distance between the source and the screen. Angular width is independent of the distance between the source and the screen. वाह, समझ में है? तो इसमें अगर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा इसमें? देखो इंटेंसिटी कैसा आएगा? इंटेंसिटी मैक्सिमम व्हाट सभी में. अरे तुम्हारा ब्राइट स्पॉट में इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगा, फिर डार्क स्पॉट में 0, ब्राइट स्पॉट में मैक्सिमम, डार्क स्पॉट में 0, ब्राइट स्पॉट में मैक्सिमम, डार्क स्पॉट में 0, ब्राइट में मैक्सिमम, डार्क में 0. जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किए थे हम लोग एग्जैक्टली वैसे ही आएगा. ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं. वाह, ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ आ रहा है. हुआ कि नहीं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में? वाह, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था. वाह, दिस ऑल अबाउट योर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट.